आई थिंक इट्स फाइन एज लॉन्ग एज अगर आपको समझ आ रही ना तो मेरे ख्याल से बस इतना काफ़ी है, सही है। लेकिन रिकॉर्डिंग कर लें, यूट्यूब के लिए वीडियो बन जाएगी। अभी भी ब्लैक ही आ रहा है स्क्रीन, या अब सही हो गया? नो, अब सही है। एवरीथिंग इज ओके राइट? या। ऑलराइट, सो सबसे पहले जो है ना हम स्टार्ट कर लेते हैं आपकी इंट्रोडक्शन से, सही है। ऑलराइट। अगर सबसे पहले दो तीन चीज़ें हैं जो आपकी कॉल में होनी चाहिए। फर्स्ट, आप शाइनेस को ख़त्म करें। If you are a shy ऑलराइट। person, obviously you are not a good fit for the telemarketing, especially for any यस। kind of marketing industry, right? ओके। ओके। Secondly, you should be very very energetic. If you don't have energy, that means you are gonna lose a lot of your customers, right? राइट। तो और आपका फोकस जो है ना वो आपकी स्क्रिप्ट पे ही होना चाहिए। पीपल आर गोना टेल यू दैट मेक योर ओन स्क्रिप्ट और वो ये, लेकिन अगर आप स्क्रिप्टेड रहेंगे ना तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी इंग्लिश में मिस्टेक्स नहीं होगी। अगर आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते दैट्स गोना बी वेरी गुड फॉर यू। पर अगर आपकी इंग्लिश में थोड़ा बहुत भी इशू आ रहा है ना तो फिर आप उसको ऐसा करें कि स्क्रिप्टेड ही रहे, सही है। ओके। नाउ हम आते हैं आपकी स्क्रिप्ट की तरफ, क्लोजिंग की। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन को ऐसे ही बोलना है। Thank you so much for holding on the line. This is Simon Joseph. How are you today? कस्टमर कहता है I'm doing okay, जो भी है ना उसको अकॉर्डिंगली आपने, let's say customer says well I'm doing great, how are you today? अब उनको बोलना well thank you so much for asking me, I'm doing great। फिर उसके बाद आप स्टार्ट करें, alright, so you were just talking to one of our associate about the final expense insurance policy। It's not a policy, सही है, it's policy। पॉलिसी। ऑलराइट। इट्स पॉलिसी, ये ओ जो है ना इसको आपने ए पढ़ना है, अ। एप। इट्स पॉलिसी, पॉलिसी, यस। ओके। फिर उसके बाद आपने अगर ऐसे बोला ना वेल you were just talking to one of our या one of my associate about the final expense insurance policy। अब इसके बाद जो आप लोगों की ये जो स्क्रिप्ट है ना इसको किसी ने गलत लिखा है, सही है। अब इसमें ये ओके। होना चाहिए, ये अब होना चाहिए था ऐसे कि एंड योर कॉल वाज ट्रांसफर ओवर टू मी। अगर आपने ये लिखा ना कि इज ट्रांसफर, दिस इज कम्प्लीटली इनकरेक्ट। Your call was transferred over to me, and I'll be assisting you further regarding your final expense policy today. Okay? ऑलराइट। Customer कहेगा all right, फिर आप उसे बोलेंगे so first of all let me ask you, are you looking to have this insurance policy for yourself or your loved ones? कस्टमर अगर कहता है कि well for myself for my loved ones, आप उसे बोलना oh, great great, this is gonna be great। फिर आप कस्टमर के साथ थोड़ी सी ना रेपो बिल्डिंग करें यहाँ पर। फिर आप वो कहता ना कि well okay, फिर आप उसे बोलना कि let's say a customer says I'm gonna uh, buy this for policy for myself for my loved ones, उसे बोलना well this is what we do, to be very honestly I have been helping out a lot of people in on daily basis. I help a lot of individual like yourself, and to be very honestly, I'm gonna help you the same way I help the other individuals, right? Customer कहेगा right। फिर आप उसे बोलेंगे so now before I go over the state approved plans that you qualify for, I would like to briefly introduce myself to you first, like who I am, what I do, and all the discounts and benefits that you qualify for. Then you can tell me what to do next, alright? अब इसमें थोड़ा सा ना एक्साइटमेंट शो क्या करे, ऐसे ऐसे एक्साइटमेंट की कस्टमर के साथ आपको बात करने में मज़ा आ रहा है, ना ही कि आप इसको एक कोई बोरिंग चीज़ समझ करके काम कर रहे हैं, सही है। फिर आप कहेगा alright, फिर आप उसे कहेंगे okay, so my name is let's say my name is Simon Joseph and I'm the state license benefits coordinator for the state of जो भी आपका वो स्टेट से वो कस्टमर है। ऑलराइट। And what that means is that I am the decision maker who will help you identify which plan you qualify for. And then meanwhile, if you have any questions or concern about anything, you can feel free to ask me, and I'll be more than happy to assist you on that. Okay? All right, cool. So now there are 5 incentive-based discounts that I would like to review with you. Before we get started, first of all, let me ask you this: how old are you exactly? Like, what's your birthday? कस्टमर अगर आपको कहता है ना कि आई डोंट वांट टू गिव यू माय डेट ऑफ बर्थ, आई डोंट वांट टू गिव यू माय एज, आप कस्टमर को कहें कि वेल आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न,
But the reason why I'm asking about your age is that because this policy depends on your health conditions in your age. So I just want to make sure whether you qualify for maximum benefits or not, right? I just want to Okay. make sure to qualify you for maximum benefits, which are specifically designed for your age group, right? Customer get that 63. Oh my goodness, you are sounding way younger than that. I thought you would be in your earlier 50s, like maybe 52, 53, or let's say 54. अब कस्टमर आपको कहता है कि मैं 80 का हूँ, तो आप उसको ये ना बोला करें वाह यू आर साउंडिंग एज इफ यू आर इन योर 30s. दैट्स अनरियलिस्टिक. इतना भी नहीं. अच्छा. कस्टमर कहता है वेल ओके. आई मीन माय कस्टमर कहता है आई एम 83. उसे बोलना ओह माय गुडनेस यू आर साउंडिंग वे यंगर. आई थॉट यू वुड बी इन योर अर्लियर 70s. 10-15 साल का अगर आप गैप दे देते हैं ना तो कस्टमर भी समझ लेता है कि यार वाकई में साउंड यंग कर रहा हूँ. लेकिन अगर ऑलराइट. आप जैसे आपकी एज लेट्स से अगर आपकी एज 22 है और मैं आपको कहता हूँ वो oh my goodness, you are sounding as if you are still 9 or 8. You would be like, what's wrong with this guy? Do I sound really 9 or 10? तो तो इसी तरह से आपने इसको ना थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाना है, ओके. राइट? बी रियल, यस. तो कस्टमर से फिर आप डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे, फिर आप उसे बोलेंगे alrighty, well thank you so much for providing me with that information, I really appreciate it. And so now have you lived in the same state for at least 1 year or more than that? Customer kega, well, actually I've been here my entire life. I was like, oh, there you go. So you must like it being there in this state. What's the secret that you've been here the entire life और जो भी है ना इसी तरह से है ना आप उसके साथ रेपो बिल्ड करें. कस्टमर आपको ना ओके. फिर अपने बारे में बताएगा, well you know to be very honest I've been here in Florida for like 77 years, right? And this is what I like. The city, the area, I got my own family here, I got my, relatives here, I got my spouse और जो भी वो बता रहे हैं सही है. ऑलराइट. अब यहाँ पर आपकी जो ये जो रेपो बिल्डिंग है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक कस्टमर, क्योंकि आप कस्टमर को अच्छा फील कराएंगे बिल्कुल. उसके बाद ही जाके वो आपसे बात करेंगे. जी सेकेंडली जी. अगर आपको अपनी इंग्लिश नहीं आती, डू नॉट स्पीक इनकरेक्ट इंग्लिश. अगर आप इंग्लिश, क्योंकि जब आप स्क्रिप्टेड रहते हैं तो यू आर साउंडिंग प्रोफेशनल. But when you go out of the script and you don't have very good English, you are making, grammatical mistakes, or let's say या. you are mispronouncing words. The customer would come to know that you are not actually a professional individuals, right? राइट. Yeah. So फिर उसके बाद आप ने उससे स्टेट ले लिया. Let's say that individual lives in Florida. फिर आप पूछेंगे, okay, and which state were you born in? Were you born in the same state, Florida, or you were born somewhere else, right? क्योंकि उनके जो सोशल सिक्योरिटी है ना वो उस पे फिर नज़र आ रहा होता है कि वो कौन से स्टेट में जो है पैदा हुआ था, उस स्टेट का ही वो उसको इशू कराते हैं, सही है. ऑलराइट. अब ये नंबर आप 4 पे जो था ना, एंड इफ यू लाइक द फाइन एक्सपेंस इंश्योरेंस, ये इन्होंने कट करवा दिया. 5 वाला वो कह रहे थे कि आपने पूछना है डू यू हैव अ चेकिंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट. मैं आपको सारी चीज़ें अपनी तरफ से बता देता हूँ, जो जो चीज़ें उन्होंने कट की है ना, आप उनमें से कट करे आए. मैं जस्ट आपको ठीक. मतलब एक आप अपने रिकॉर्ड कर रहे हैं एक्सपीरियंस के ना? बेस पे चीज़ें समझा. जी जी, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. ऑलराइट. ठीक है, ठीक है. मतलब फिर आप फिर आप कस्टम मुझे भेज देंगे वीडियो. सॉरी, मैंने कहा फिर आप वीडियो मुझे भेज देना देंगे ना, मुझे इजी हो आई जाएगा फिर. आई डोंट नो कि ये वीडियो बन रही है या जस्ट ऑडियो, व्हाटएवर इज. बननी चाहिए. हाँ, जो भी है बस वो फिर आप देख लेना, सही है. ठीक है. ऑलराइट, ऑलराइट. Alright, फिर उसके बाद आप उसे पूछेंगे क्वेश्चन फोर्थ पे, इफ यू लाइक दिस फाइनल एक्सपेंस इंश्योरेंस पॉलिसी देन दिस वन इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट पॉलिसी और एन एडिशनल पॉलिसी. ये आप लोग पूछते हैं या नहीं पूछते? ये नहीं पूछते ना. Alright, yeah, it shouldn't be even asked. अगर कस्टमर की पहली पॉलिसी है, दूसरी है, तीसरी, as long as a customer is ready to get the policy, और वो ले भी सकते हैं वो भाई, उनके पास अगर ऑलराइट. एक कवरेज है वो दूसरा तीसरा वो एड ऑन कर सकते हैं कवरेजेस, राइट? ओके. फिर आप उसे बोलेंगे alrighty, and lastly, okay, and last but not the least, you have a checking account or saving account. आप कस्टमर से राइट अवे ऐसे पूछे ना कि alrighty, अब ये वाला ऐसे पूछना ही मत जिस तरह आप लोगों ने लिखा. उसे बोलना alrighty, and I believe that you got a bank account, maybe like a savings or checkings accounts, right? कस्टमर कहता है राइट, ओके होता है, तो आप उससे पूछेंगे कि alright, so which one you got, is it a saving account or is it a checking account, which one you got? कस्टमर आपको बता देता है. फिर उसके बाद अब हर
कॉल सेंटर के अपने रूल्स होते हैं, कोई कोई जो है वो डायरेक्ट एक्सप्रेस पे भी कस्टमर्स को लेके जाते हैं, कुछ लोग जो है क्रेडिट यूनियन पर भी कस्टमर को लेके जाते हैं। अगर आप ये कॉल सेंटर में जिस बैंक अकाउंट पर लेके जाते हैं तो फिर कस्टमर के पास सेवेंस और चेक इन्स, ये आप लोगों ने लिखे भी गलत है, सही है। दिस इज नॉट चेकिंग और सेवन, there is an s after check-ins and savings, right? हम्म, तो इसकी में आप लोग फिर check-ins and savings ही लिखना है, सही है। ठीक है। यस, ये कस्टमर ने बता दिया ना, वाला आई एक्चुअली आई गार सेविंग्स अकाउंट, उसे बोला ओके कूल कूल कूल। फिर आप उसके बाद उसे बोला थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वेरी कोऑपरेटिव, आई रियली अप्रिशिएट दैट यू प्रोवाइडेड मी विद द इंफॉर्मेशन दैट आई वाज लुकिंग फॉर, सो नाउ you perfectly qualify for some additional discounts as well. Now I'll explain to you a little bit about our policy, like the policy here, like how it works and everything, right? हम्म, So अब कस्टमर से ना किसी तरह से आप इंट्रो के शुरू शुरू में उसका फर्स्ट एंड लास्ट नेम किसी तरह से ले लिया करे, उसका फ़ायदा ये होगा ओके। ना कि जो हम्म, गोरे हैं ना उनको उनको पसंद आता है जब आप उनके उनके नाम से बुलाते हैं, सही है। ऑलराइट। जैसे लेट्स से हम्म, योर नेम इज सेरा विलियम्स और व्हाटएवर, राइट? तो आप उसको बुला लिया करें मिसेस विलियम्स, या फिर आप उसे ये भी पूछ सकते हैं कि मैम कैन आई कॉल यू मिसेस विलियम्स और डू यू वांट मी टू कॉल यू जस्ट सेरा। जो उनको बेहतर लगे ना उसी नाम से फिर उनको बुलाना शुरू करें। एंड आई थिंक इट फील्स गुड वेयर somebody इज कॉलिंग यू बाय योर नेम। वो कस्टमर थोड़ा यंग फील करते हैं जब आप उनको उनके नाम से हम्म, बुलाते हैं, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम मैम